My dear students, let me discuss the concept of oscillations, in which we have to prove that a body which is going in an anticlockwise direction in a circular motion is going to represent simple harmonic motion. And how is it going to be possible? Let us see here now. Let us consider the particle is moving in an anticlockwise direction with a constant velocity. Velocity is going to be constant here. Okay. So if velocity is going to be constant, let us drop one perpendicular along the x dash and another perpendicular here and here with along the yo and y dash, two x-axis and y-axis. Now, in this case, if you take this angle as theta, this can also be taken as omega t, because angular velocity is nothing but angular displacement by time, and angular displacement is nothing but angular velocity into time here. So therefore, if this is sine omega t, now let us take the distance from here to here as x and this distance as going to be y here. So in such situations, if this is y, this is also going to be y here. Now let me write here cos omega t, which is taken as this angle, and adjacent side is x, and this is going to be radius and also called as amplitude. Why is it amplitude here? This is going to be a mean position and this is going to be an extreme position. So from mean position to extreme position, if displacement slowly increases, it is going to become an amplitude. So therefore, this can be taken as radius and it is also going to be an amplitude here. So therefore, cos omega t is nothing but adjacent side by hypotenuse. So here, x can be taken as r and also taken as r is can also be taken as a here. So a. So it can also be taken as a cos omega t. Similarly, if you take sine omega t. So this sine omega t can be taken as opposite side, that is y, and hypotenuse is taken as an amplitude, that is a here. So I can write this as y is equal to a sine omega t. Okay. So if this is y is equal to a sine omega t, we can find out velocity also, because we got displacement along the x-axis and along the y-axis. Then here, so displacement along the y-axis, if you consider, we can find out the velocity by just differentiating this concept here. No? We are going to differentiate the above one, getting velocity here, that is dy by dt. If you differentiate this one, amplitude is going to be constant, and sine omega t can be taken as cos omega t after differentiation, and this omega t, if you differentiate, you are getting omega here. That's why you write, and dt by dt gets cancelled here. So double time you have to differentiate. We're getting velocity now. So therefore, we got velocity as a omega cos omega t. Okay. How can we find out an acceleration? If you differentiate velocity once again with respect to time, you are getting acceleration here. So acceleration is nothing but dv by dt. That means you have to differentiate all this. So here, this can also be taken as a omega. If you differentiate cos omega t, you will be getting minus sine omega t. And again, if you differentiate omega t, you will be getting omega once again, and dt by dt gets cancelled. So one more omega if you add here, if you multiply here, getting omega square here. Okay. So therefore, acceleration is equal to minus, so omega square, and here a sine omega t is taken as y. So here also a sine omega t can be taken as y, which is nothing but omega square into y. So we got velocity, we got acceleration, we got velocity here. How much is going to be the velocity? Velocity is a omega cos omega t. Okay. If you want, you can take capital A omega cos omega t. So what is going to be the maximum velocity? Velocity is going to be maximum at the mean position, and at extreme position it goes to stop, another extreme position it is going to stop. So velocity is going to be maximum at the mean position. Therefore, at the maximum velocity, the maximum value of cos omega t is 1. Angle for trigonometric functions like cos omega t lies between -1 and +1. So maximum value of cos omega t is going to be 1. Therefore, V maximum is going to be omega A. Then if you get an acceleration as minus omega square y, then what is maximum acceleration? Maximum acceleration can be taken as minus omega square A. Here, y is going to become A, because acceleration is maximum at the extreme positions and minimum at the mean position. Okay, so acceleration is always directed towards the mean position. Therefore, we're getting acceleration as maximum, which is minus omega square into A. That's it.
Welcome to Fakhruddin Academy. My dear students, today I'm going to give you a simple explanation for time period of oscillation of a simple pendulum here. Let me discuss. Whenever you take a simple pendulum, this is said to be the mean position. And when you take the simple pendulum to the other side, making certain angle theta, there is one more force acting on that, which is called as restoring force, which will again bring back the pendulum to the mean position from the extreme position. This is said to be the extreme position where it goes and stops and comes back again. So therefore, if you consider this as a curve and that distance is taken as x here, which is said to be the length of a pendulum is taken as L here, then you are going to do one thing here. How many forces are acting on that pendulum? One is mg is acting downwards in this direction. Exactly, these two angles are going to be same because they are said to be corresponding angles. These two lines are parallel, so these two angles are said to be corresponding angles. Therefore, this is mg. This is going to be mg cos theta, and this force which is said to be mg sin theta, and this force is said to be mg sin theta, which is called as a restoring force. Why is said to be restoring force? And that too it is negative here because this is the force which brings back the pendulum from extreme position to mean position, which is going from mean to extreme. So this is a reverse force acting. That's the reason why it is going to be negative here. Therefore, restoring force is taken as ma, which is equal to minus mg sin theta. Gets cancelled. A is equal to minus g sin theta. If this angle is very, very small, that it is less than 5 degrees, then we can write sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. Therefore, acceleration is equal to minus g. Sin theta is opposite side is x by L. So x you write here, by L you write here. This can be considered as equation number 1. You know the general equation. Acceleration is equal to minus omega square into x. This is taken as equation number 2. Compare these two equations and write a simple formula. That is omega square is going to be g by L and omega is going to be root of g by L. And you know omega is nothing but 2 pi by capital T, which is nothing but root of g by L. You make it reciprocal. You make the reciprocal and do the cross product. Then we're getting T is equal to 2 pi root of L by G. And this is going to be the time period of a simple pendulum. Simple formula. That's it. My dear students, today I am going to discuss about what is the time period of a loaded spring which is oscillating up and down. When you pluck this loaded spring, mass m is plucked downwards, it's oscillate up and down, and the displacement from mean position to extreme position is given as x here. Then what is going to be the time period of this loaded spring? For that, you always know that force is always directly proportional to displacement but opposite in direction. Okay, and that's the reason why we write this as minus kx. We write force as minus kx, and that force is called as restoring force. Whenever you pull the body downwards, one force will again take the body to the mean position, and that is said to be restoring force, which is given as minus kx. And you also know force is equal to mass into acceleration. This is a general formula. Make them equal, then you will get ma is equal to minus kx. A is equal to minus k by m into x here. Okay, but you all know what is the general formula for acceleration. Acceleration is given as minus omega square into x. Make them equal again, then what are you going to get? Omega square is equal to k by m. Therefore, this implies that omega is equal to root of k by m. You know omega is nothing but 2 pi by capital T, which is nothing but root of k by m. So you make it reciprocal and do the cross product, you'll be getting T is equal to 2 pi root of m by k. That's it. Going to be the time period of simple pendulum oscillation. That's it. My dear friends, today I am going to discuss about oscillations chapter, in which a small concept is there which is called as velocity displacement graph. Velocity is along the y-axis and displacement along the x-axis. Let me discuss about this graph. You are very much familiar. You are very much familiar by this equation, that is v is equal to omega square root of a square minus x square. This is a very familiar equation which you know about that. Now, squaring on both sides, you just write v square and this omega square, let me write in the denominator, that is omega square, and right side only a square minus x square is left because square and square root get cancelled here now. Then v square by omega square, this x square you can just take to left side. Then what is left at the right side? Only a square is left. Okay.
So finally, you are writing v square omega square. This a square comes to denominator, becomes a square plus x square by a square is equal to 1 here. Okay. So this is the final equation you're getting. So from this, it is understood that displacement velocity is showing an ellipse here. Okay, where along the y-axis omega a is present, along the x-axis amplitude is present. So this is going to show the ellipse equation. That's it. Thank you very much. My dear students, today I am going to explain about the graph which explains acceleration velocity graph, and we have to prove that it is having a shape of an ellipse here. Before that, you should know the basic formula that acceleration is equal to omega square x, and you should also know that velocity is going to be omega square root of a square minus x square. And if you square this on both sides, it is going to be v square is equal to omega square a square minus x square. Okay, and here in the place of x, you have to substitute x is equal to a by omega square. This value, if you substitute here, we're getting v square is equal to omega square a square minus x square, where x square is equal to a square by omega power 4, because you have to square this one. Then after that, v square is equal to omega square a square minus omega square 4 gets cancelled here. What is left now? A square by omega power square. That's it. So this is going to be left here now. Then you just shift this one to left side. V square plus a square by omega square is equal to omega square a square is left here, which is left here. This comes to left side. Then finally, what is going to get now? The simple thing is v square you write like that only, and this you shift to downwards, which is going to be omega square a square plus a square divided by shift to this denominator. There's going to be omega power 4 a square, which is equal to 1 here now. The simple thing is, the final step you are going to write like this: v square divided by omega a whole square plus a square divided by omega square a whole square. Okay, it's going to be capital A, which is equal to 1. That's it. So this is in the form of an ellipse. This is said to be the equation of an ellipse. Therefore, velocity acceleration graph is going to be having a shape of an ellipse. That's it. My dear students, the best example for simple harmonic motion or oscillation is not a tail of a buffalo. The best example is simple pendulum. Let me discuss some of the graphs which are going to explain the simple harmonic motion, in which we'll discuss displacement, velocity and acceleration. Generally, this is going to be the mean position of a simple pendulum. This is going to be the mean position. When you lift the simple pendulum on the other side, which is said to be an extreme position, and you leave it, then it starts oscillating. So this is going to be the starting point, where from mean position to extreme position it is called as an amplitude. So therefore, displacement will be maximum. It starts from here, and at this place, what is going to be velocity? Velocity is going to be 0. So the graph for velocity time will start from 0. Okay, and now it comes to the mean position. This will be towards the mean position. The velocity increases in the negative sense here. The velocity increases. So here velocity increases, and at the mean position velocity is going to be maximum. Therefore it goes to maximum. After it goes to another extreme position, so graph will rise. Whereas the displacement, when it starts from maximum and come to mean position, it decreases. Here displacement is going to be 0. At this place, displacement is going to be 0. After it goes to negative maximum, so it comes like this. So here the time period for one oscillation is taken as capital T. Capital T. Okay, that means it starts from here, goes to another extreme point, and comes to again the previous position, which is called as the starting point. Therefore, from here to from extreme to mean, it is taken as T by 4, and again from mean to extreme it is taken as T by 4. Again extreme to mean it is taken as T by 4, and this is one more T by 4. The total time period is taken as T here. So therefore, this is displacement and velocity. And acceleration, if you observe, so here acceleration at this extreme point, when the displacement is maximum, what is going to happen in acceleration? Acceleration is given as minus omega square into a. Okay, because displacement is going to become amplitude here. Okay, so it starts from minus omega square a. Why minus? Because
During the derivation we have said that acceleration is going to be minus omega square into y, or it's going to be minus omega square into x here. So x will become a when it is maximum. So therefore from here acceleration comes to 0 when the mean position is there. So similarly the graph will start like this from the negative sense here. When the displacement is positive, then acceleration is going to be negative here, because displacement is from mean to extreme, whereas an acceleration goes on increases from extreme to mean. That's the reason these three graphs are drawn like this. That's it. Thank you. Don't scroll. You will lose a shocking shortcut for this breaking problem, which I'm going to crack now with a simple shortcut here. See, these are the two blocks with four springs having spring constants k. What is the time period of this type of oscillations? Simple and shortcut method I'm going to explain today to you. You all know time period is nothing but 2 pi root of m by k. This is a general formula for any single spring. Just simple thing you have to do is, instead of m you have to write reduced mass, instead of k you have to write effective spring constant. That's it. So what is the meaning of reduced mass? Reduced mass is nothing but product of the masses divided by sum of the mass. That means product of the mass by sum of the mass. That's it. So reduced mass is m by 2. What is k effective? See, this type of situations explains that all the four springs are in parallel. That's it. Simple shortcut. Parallel means you have to add them. So four springs, if you add, it is going to become 4k. The simple formula for this, simple solution for this is 2 pi root of reduced mass is nothing but m by 2 divided by kf is nothing but 4k. So therefore, you'll be writing 2 pi root of m by 8k is your answer. That's it. If you want to just simplify, right? That's it. प्यारे दोस्तों, क्या ही अच्छा होगा कि इतने बड़े सॉल्यूशन को सिर्फ एक ही स्टेप में सॉल्व किया जाए और 40 सेकंड्स के प्रॉब्लम को सिर्फ 5 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया जाए, और आपका फिजिक्स का जो एग्जाम है, चाहे नीट हो जेईई मेंस हो, सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाए तो कितना मजा आएगा। अभी देखो उस तरह का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ग्लास से बनाए गए हैं। 1.5 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बीच में लिक्विड है जिसका कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा, वो 1.7 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां पर टोटल फोकल लेंथ कितना है बोल के पूछ रहा, सिर्फ एक ही स्टेप में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फोकल लेंथ नेट इज इक्वल टू आर बाई 3 इंटू 2 इंटू म्यू माइनस म्यू एल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड। ओके, तो यहां पर दे दिया 1.7, सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो सटक से फटक से आंसर आ जाएगा। आर कितना है 20, आर कितना दिया भैया 20 सेंटीमीटर। सो 20 डाल दो, 3 माइनस 2 इंटू 1.7। ओके, तो ये क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3.4, तो आएगा आंसर कितना। सो इट्स गोइंग टू बी 20 डिवाइडेड बाई, ओके, सो 20 डिवाइडेड बाई 0.4 माइनस 0.4। ओके, तो आपका आंसर आएगा माइनस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फटक से आंसर आ गया, एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ गया ना। तो इस तरह के हमने 3000 से लेकर 5000 शॉर्टकट्स बनाए हैं। ठीक है, थैंक यू। प्यारे दोस्तों, 40 सेकंड्स के प्रॉब्लम को अगर हम 4 सेकंड में सॉल्व कर दे तो क्या ही अच्छा होगा। तो देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर थिन प्रिज्म है, राइट एंगल्ड प्रिज्म, और उसके अंदर एक लाइट जो है ना परपेंडिकुलरली जाकर वहां पर बेंड हो रहा है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और यहां पर छोटा सा एंगल दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म दैट इज 6 डिग्रीज दे दिया। अब हमको चाहिए क्या, यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस चाहिए। अगर मैं कहूं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर मल्टीप्लाई कर देना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, which is nothing but 1.5 into a, that is 6 degrees, the answer is 9 degrees. okay, तो इसका लेंथी सॉल्यूशन के लिए नीचे गए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह के शॉर्टकट्स हमने तकरीबन 3000 शॉर्टकट से 5000 शॉर्टकट्स बनाए हैं। थैंक यू। इस प्रॉब्लम को
करने का शॉर्टकट तो मैंने समझा दिया, अब इसके पीछे का फिजिक्स क्या है वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अभी देखो ये थिन प्रिज्म है, राइट एंगल्ड प्रिज्म, और ये जो है ना परपेंडिकुलरली जा रहा है 90 डिग्री से, और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट इज टेकन एज I2, ये हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल व्हिच इज टेकन एज रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच इज टेकन एज R। अब यहां पर इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, यू ऑल नो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो यहां पर जो है 90 डिग्री जाने की वजह से R1 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू ये विच इज नथिंग बट 6 डिग्री। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला विच इज नथिंग बट साइन I2 बाई साइन R, ठीक है। अब थिन प्रिज्म होने की वजह से साइन जो है ना निकल जाएगा, साइन नहीं रहेगा, ठीक है, बिकॉज साइन थीटा विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो बस करना क्या है, अभी I2 मालूम करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, सो I2 इज नथिंग बट म्यू इनटू R। बस इतना सा शॉर्टकट याद रखेंगे ना तो आप जो है सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। बस इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, 1.5 इंटू R, दैट इज नथिंग बट 9 डिग्री इज योर आंसर। थैंक यू। अरे दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम को अगर आप किरचॉफ लॉ यूज करेंगे तो प्रॉब्लम जो है ना 40-50 सेकंड लग जाएंगे, मगर इसके बजाय आप मिलमैन्स थ्योरम यूज करेंगे तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। मिलमैन्स थ्योरम क्या बोल रहा है, वोल्टेज पहचानने के लिए बोल रहा है ना, वोल्टेज इज नथिंग बट EMF by resistance plus again EMF by resistance divided by reciprocal of resistance का सम करना है यहाँ पर, ओके। तो इसके अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो प्रॉब्लम जो है सिर्फ 5 सेकंड्स में आया था अभी। तो पोटेंशियल का E1 by R1 क्या हो गया, 18/2 प्लस अगेन 12/1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/1। तो इसको सॉल्व करो आप, आराम से 14 वोल्ट 5 सेकंड्स में आ जाएगा। थैंक यू सर। आपके शॉर्टकट्स हमारा टाइम किस तरह सेव करते हैं, एक छोटा एग्जांपल बोलो ना सर। तो आपको शॉर्टकट किस तरह काम करें, किस तरह टाइम को सेव करते हैं, यही चाहिए ना आपको। देख लो, लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, हमारे बुक के अंदर PDF के अंदर और वीडियोस के अंदर का शॉर्टकट भी बताऊंगा। अभी देखो ये जो है ना मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन है एटम्स का, द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू दैट ऑफ बार्मर सीरीज बोल के दिया ना, आप भी देख रहे ना, आप लोग भी दे दिया। तो जनरली आप इतने सारे स्टेप्स लिखकर लास्ट में क्या बोलेंगे, 5/27 डालेंगे। मगर अगर इतना छोटा सा एक फॉर्मूला अगर याद अगर रहेगा ना आप लोगों को तो सेकंड्स में आंसर आता। अब ये पर यहां पर n = 1 डाल दो तो आपको क्या आएगा, लाइमन सीरीज आएगा, और n = 2 डाल दो इसके अंदर तो आपको बार्मर सीरीज का भी फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि दोनों आ जाएंगे। ये दोनों को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे ना तो सिर्फ देखो इस आंसर को सॉल्व करने के लिए अगर आपको 40 सेकंड्स अगर लगेंगे ना तो इसको सॉल्व करने के लिए ये 5 सेकंड्स लगेंगे। प्रैक्टिस करते करते 5 सेकंड्स में आया था। तो आप जो टाइम यहां पर सेव कर रहे हैं ना फिजिक्स के अंदर, ये आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी में काम आएगा। बचा हुआ टाइम उधर आप स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है ना बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए टाइम बहुत जरूरी है। फिजिक्स का टाइम बहुत खा जाता है, इसको रिड्यूस करेंगे तो वहां पर फायदा होता है आप लोग, ठीक है। तो देख लो 5/27 आंसर आ गया ना, तो 5/27 आंसर है सी ऑप्शन। ये क्या है सर, ये स्प्रिंग क्या, तो भी ये इतना राउंड स्प्रिंग है क्या है, अंदर बीच में मासेस है, कैसा परेशान, कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, कुछ फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, क्या तो भी अप्लाई कर रहा है इसको। थोड़ा शॉर्टकट है तो बोलो ना सर इसको, है ना भाई, कई परेशान हो रहे हैं आप, हम है ना इधर, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो इसको आसान कर देंगे, एक ही स्टेप में डाल देंगे आप। ये हो गया आपका बुक्स का मेथड, ठीक है। तो बुक्स के अंदर जो है ना ये वाला मेथड दिया है, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम बाईपास कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी कर देंगे हम, हार्ट अटैक आने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखो इसको कुछ भी नहीं करने का है अपने को, पहले 2 मासेस है, इधर एक मास इधर एक मास है, यम और यम समझो इसको। सबसे पहले क्या करो आप, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, क्या है रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस into sum of the masses, ठीक है, by 2, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस into sum of the masses, दोनों मासेस को ऐड कर दिया तो 2m हो गया, ये हो गया, ओके। तो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या हो गया, m/2। उसी तरह जो है ना यहां पर दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल कनेक्शन में है, तो पैरेलल कनेक्शन में है तो फिर रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया 2q, क्योंकि ऐड करना है ना पैरेलल कनेक्शन में, यू हैव टू ऐड देम।
अब बस सिंपल सा फॉर्मूला डाल दो, 2 पाई रूट ऑफ m reduced by k effective, ओके, m reduced by k resultant डाल दो, आसान है, इज नथिंग बट 2 पाई mr के प्लेस में m by 2 डाल दो, डिवाइड बाई kr के प्लेस में 2k डाल दो, ओके। अब देखो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई रूट ऑफ m बाई 4k, ठीक है, तो ये 4 बाहर आ गया तो 2 कैंसिल, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो बच गया क्या, टाइम पीरियड के प्लेस में पाई बच गया, m बाई के क्या है, m भी 0.1 है और k भी 0.1 है, तो ये भी कैंसिल हो गए, तो बचा टाइम पीरियड पाई, तो फ्रीक्वेंसी हो गया रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब 1 बाई पाई आपका आंसर है। बस सिंपल सा मेथड हमने अप्लाई किया, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। सर ये इन्फिनिट सीरीज, अच्छा बहुत दम कर रहा सर, बहुत टाइम वेस्ट करेगा ना, तकरीबन 40 सेकंड्स ले रहा सर, कभी कभी 1 मिनट भी ले रहा, ये कभी ये 5 सेकंड्स में कर सकते हैं क्या, जरा बोलो ना। ठीक है इसके लिए है ना, इसके लिए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में आ जाता आपको। ये इन्फिनिट सीरीज का प्रॉब्लम, ये 4 है, ये 7 है, ये स्मॉलर वन है, ये लार्जर वन है, एक ही स्टेप में आंसर दे दो, ये वाला स्टेप यूज कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर दो। बस क्या करना है यहाँ पर आपको, यू हैव रेड एक्स स्क्वायर प्लस सी स्मॉलर, स्मॉलर मतलब 4 इंटू एक्स माइनस मी सी स्मॉलर इंटू सी बिगर, खत्म। तो 4 7 28 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो एक्स के लिए, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, बस सेकंड्स में आंसर, कोई परेशानी नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम सर, इंडिया के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं फिजिक्स को लेकर सर, फिजिक्स उनकी ज़िंदगी से खेल रहा है, आप कोई शॉर्टकट्स क्यों नहीं बता देते ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। अब देखिए इस प्रॉब्लम का इतना बड़ा सॉल्यूशन सर, बच्चे जो है सर खुजा रहे हैं और एक एक सॉल्यूशन के लिए एक एक मिनट लग रहा, हालांकि एग्जाम के अंदर उतना टाइम नहीं रहता। मेरे दोस्त तुम्हारे बातों से मेरा खून खौलता है, इसलिए मैंने फिजिक्स के 3000 शॉर्टकट्स बनाए हैं, इसका एक छोटा सा नमूना तुम्हारे सामने पेश करता हूं मैं, जो कि इंडिया के बच्चों को हिला कर रख देगा और उनकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। फिजिक्स उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो ये प्रॉब्लम को देख लो अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखो इतना, ये जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स है, 2 माइक्रो एंड 8 माइक्रोफैराड्स, और यहाँ पर पोटेंशियल कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये किस तरह डिवाइड होंगे, एनर्जी स्टोर्ड इज डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न फ्रॉम पोजिशन 2, मतलब ये स्विच 1 को था फिर 2 को जाएगा, ये पहले यहां पर कनेक्टेड था फिर यहां पर कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो यहां से निकालकर यहां पर कनेक्टेड होगा, तो यहां पर जो भी पोटेंशियल है इसके वजह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा। अब इतना आसान सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप जो है ना दिल से दुआ देंगे मुझे, ठीक है। तो यहां पर देखो 2 माइक्रोफैराड्स, एक में 8 माइक्रोफैराड्स है ना, बस ये दोनों रेशियो किस तरह है उस तरह डिवाइड होगी, इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 100% जो भी एनर्जी है ना, तो ये यहां पर 2 माइक्रोफैराड्स के पास 20% जाएगा और 8 माइक्रोफैराड्स के पास 80% जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 80% है, क्योंकि एनर्जी जो है ना 8 माइक्रोफैराड्स को कितना जाएगा पोजीशन 2 को कन्वर्ट करने में, तो 80 माइक्रोफैराड्स, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, और कोई भी फॉर्मूला बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, इतने आसान मेथड्स मैंने बताए हैं इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, वर्क पावर एनर्जी के अंदर स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, इसको सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे, इतना सिंपल वे में समझाऊंगा। अभी देखो 2 स्प्रिंग्स है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, यहां पर भी K1 K2 है, सीरीज कनेक्शन में है और ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो सीरीज और पैरेलल के बीच का डिफरेंस क्या है, यहां पर देखो एक ही वेट, एक ही फोर्स mg आके दोनों स्प्रिंग्स के अंदर कनेक्ट है, मतलब यहां पर जो है फोर्स कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, फोर्स इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और यहां पर क्या कांस्टेंट है, एक ही वेट को 2 स्प्रिंग्स अटैच्ड है, इसका मतलब दोनों के एक्सटेंशन सेम है, यानी कि x इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर। तो फिर क्या चीज है ऐड हो रही यहां पर, देखो सीरीज कनेक्शन के अंदर x इन सीरीज इज गोइंग टू बी, यहां पर इसका एक्सटेंशन x1 है, इसका एक्सटेंशन x2 है, x1 प्लस x2, ठीक है। एंड आपको मालूम है कि f इज इक्वल टू kx, ठीक है, तो x इज इक्वल टू f बाई k, ठीक है। तो यहां पर x इन सीरीज के अंदर f इन सीरीज बाई k इन सीरीज इज इक्वल टू, f तो कांस्टेंट है, तो f बाई k1 प्लस f बाई k2, ठीक है। तो f सीरीज के अंदर f सीरीज का f भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों के तीनों सेम है, ये चले जाएगा, तो 1 बाई k सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस
1/k2, मतलब k सीरीज इज इक्वल टू k1 k2 बाई k1 प्लस k2। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, सीरीज के अंदर। अब जानेंगे पैरेलल के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज का कॉन्सेप्ट। अभी देखो पैरेलल के अंदर क्या होगा। अभी पैरेलल के अंदर जो है ना एक्सटेंशन सेम है, ओके, फोर्स डिफरेंट है, फोर्स डिवाइड हो रहा। ये दोनों स्प्रिंग्स के अंदर थोड़ा फोर्स यहां पर आएगा, थोड़ा फोर्स यहां पर डिवाइड होगा, तो फोर्स डिवाइड होगा, एक्सटेंशन सेम है। तो यहां पर फोर्स इन पैरेलल कनेक्शन दे आर गोइंग टू बी एडेड, F1 प्लस F2, एंड फोर्स का मतलब kx। तो यहां पर क्या होगा, k पैरेलल इंटू x इज इक्वल टू k1x प्लस k2x। क्यों? क्योंकि x कांस्टेंट है यहां पर, ठीक है, तो x इज कांस्टेंट, उधर फोर्स इज कांस्टेंट, तो यहां पर x चले जाएगा, तो k पैरेलल क्या होगा, k1 प्लस k2। ये हो गया आपका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन फॉर k पैरेलल एंड k सीरीज। दैट्स इट।